इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। भारत श्रीलंका देशौ रक्षोर्जा व्यापार क्षेत्रेषु सामरिक विकासात्मक सहभागित्वस्य प्रोत्साहनाय सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतवन्तौ। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः पुनरुक्तवान् यत् अग्रिमे वर्षे मार्च मासान्ते छत्तीसगढ़ राज्ये रक्तातंकवादस्य समाप्तिः भविष्यतीति। जम्मू कश्मीर प्रदेशे सीमासुरक्षाबलेन जम्मू अन्ताराष्ट्रिय सीमायाम् एकः पाकिस्तानदेशीयः अवैध प्रवेशकः गोलिकाप्रहारेण मारितः। वैश्विकार्थशास्त्रज्ञाः राष्ट्रपतिना ट्रम्प इत्येतेन विहितस्य पारस्परिक शुल्कस्य अनन्तरम् अमेरिकायाम् आर्थिक मन्दतायाः विषये प्रत्यादेशं प्रदत्तवन्तः। म्यांमारदेशेन बांग्लादेशे 80,000,000 रोहिंग्या जनाः प्रत्यावर्तनाय योग्याः इति अभिख्यापितम्। अपि च लक्ष्यवेधक क्रीडायां भारतस्य सिफ्त कौर साम्रा अर्जेन्टीनादेशे आयोजितायां ISSF विश्वचषक स्पर्धायां महिलानां 50 मीटर राइफल्स 3 पोजिशन स्पर्धायां स्वर्णपदकं प्राप्तवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य कोलम्बो नगरे श्रीलंकादेशीयेन राष्ट्रपतिना अनुराकुमार दिसानायके इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां साधितवान्। सञ्जातवार्तायाः प्रयोजनं उभयोः देशयोः मध्ये कार्यनीतिक विकासस्य सहभागित्वस्य चापि संवर्धनमिति विद्यते। उभयोः नेत्रोः उपस्थित्यां रक्षोर्जां समेत्य विविध क्षेत्रेषु अनेकेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि सञ्जातानि। संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रतिपादितं यत् राष्ट्रपतिः दिसानायके इत्येषः स्वप्रथम विदेशयात्रायै भारतस्य चयनं कृतवान्, यद्धि उभयोः देशयोः मध्ये घनिष्ठान् विशिष्टान् सम्बन्धान् प्रदर्शयति। असौ प्रोक्तवान् यत् भारतस्य प्रतिवेशी प्रथमनीतिः क्षेत्रे च समेषां कृते सुरक्षा विकासश्च सागराभियाने श्रीलंकादेशस्य महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर दोनों में श्रीलंका का विशेष स्थान है। पिछले 4 महीनों में राष्ट्रपति दिसानायक की भारत यात्रा के बाद से हमारे सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सामपुर सोलर पावर प्लांट से श्रीलंका की ऊर्जा सुविधा में मदद मिलेगी। मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन के निर्माण और त्रिंकोमाली को ऊर्जा हब के रूप में विकसित किए जाने के लिए जो समझौता हुआ है, उसका लाभ श्रीलंका के सभी लोगों को मिलेगा। उभौ नेतारौ दीर्घकालादेव समागम्यमानेषु मत्स्यजीवीनां प्रसंगेषु चर्चां सम्पादितवन्तौ, तथा च मानवीय दृक्पातस्य महत्वेऽपि स्वसहमतिं प्रकटितवन्तौ। अत्रावधौ श्रीमोदिना निगडने गृहीतानां मत्स्यजीविनां शीघ्र विमुक्तये बलं प्रदत्तम्। हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने मछुआरों को तुरंत रिहा किया जाने और उनकी बोट्स को वापस भेजने पर भी बल दिया। प्रधानमन्त्री सूचितवान् यत् विगतेषु 6 मासेषु भारतेन 100 कोटि अमेरिकीय डॉलर परिमितस्य राशिः श्रीलंकादेशाय अनुदाने प्रदत्तः। अनेन समुद्घोषितं यत् भारतेन द्विपक्षीय ऋण पुनर्निर्माण सहभागितायाः अन्तर्गतं ऋणमूल्यं न्यूनीकर्तुमपि निर्णयः निर्णीतः, येन हि श्रीलंका वास्तव्यानां कृते तात्कालिकरूपेण साहाय्यं मिलिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी कथितवान् यत् भारतं पूर्वीय प्रान्तस्य प्रगतये श्रीलंकादेशाय भूयोऽपि 40 कोट्यधिक 2 अर्बुद रूप्यकाणि दास्यति। हमने श्रीलंका में रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसिलिएशन पर भी बात की। राष्ट्रपति दिसानायक ने अपने समावेशी दृष्टिकोण के बारे में मुझे बताया। हम आशा करते हैं कि श्रीलंका सरकार
तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और श्रीलंका में संविधान के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन और प्रोविजनल काउंसिल इलेक्शन कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। अत्रावसरे श्रीलंका देशस्य राष्ट्रपतिः अनुराकुमार दिसानायके इत्यसौ प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः सबका साथ सबका विकास इत्येतस्य मन्त्रस्य प्रशंसां कुर्वन् एनं मन्त्रं प्रासंगिकं समयानुकूलं च उक्तवान्। अवधेयं वर्तते यत् श्रीलंका देशीयेन राष्ट्रपतिना अनुराकुमार दिसानायके इत्येतेन प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने मित्रविभूषण पुरस्कारेण सम्मानितः कृतः। प्रधानमन्त्री एतदनन्तरं प्रोक्तवान् यत् इदं सम्मानं तस्यैव नास्ति अपितु 40,000,000,000 भारतीयजनानां सम्मानं विद्यते इति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः संकल्पं पुनरुद्घाटितवान् यत् आगामी वर्षस्य मार्च मासान्तं यावत् छत्तीसगढ़-राज्ये रक्तातंकवादस्य समाप्तिः भविष्यति। छत्तीसगढ़ प्रवासावधौ बस्तर संभागस्य दन्तेवाड़ा क्षेत्रस्य बस्तर पंडुम इत्येतस्य समापन समारोहं सम्बोधयन् गृहमन्त्री माओवादिनः शस्त्राणि निक्षिप्त्वा मुख्यधारायां प्रवेष्टुं प्रार्थयत्। असौ छत्तीसगढ़स्य जनजातीय कलायाः शिल्पकलायाः च प्रचारार्थं बस्तर पंडुम इत्येतस्य प्रशंसाम् अपि अकरोत्। म्यांमार प्राधिकरणैः बांग्लादेशः दृढीकृतः यत् बांग्लादेशे आश्रयितानां 8,00,000 रोहिंग्या जनानां सूच्यां 80,000,000 रोहिंग्या जनाः म्यांमारदेशं प्रत्यागन्तुं योग्याः सन्तीति अभिज्ञातम्। बांग्लादेशस्य मुख्य परामर्शकस्य मोहम्मद यूनुस इत्येतस्य वार्ताहर वक्तव्यम् अनुसृत्य 2018-2000 वर्षयोः 6 वर्षाणां मध्ये इयं मूलसूचिः दत्ता आसीत्। वक्तव्ये एतस्मिन् उल्लिखितमस्ति यत् अन्येषां 70,000 रोहिंग्या जनानाम् अन्तिमं सत्यापनं तेषां छायाचित्राणां नाम्नां च अतिरिक्त परीक्षणस्य अनन्तरं क्रियान्वितं भवतीति सूच्यते। जम्मू कश्मीर राज्ये गतरात्रौ सीमासुरक्षाबलेन अन्ताराष्ट्रिय सीमायाम् एकः पाकिस्तानीय अवैधप्रवेशकः मारितः। अस्माकं जम्मू वार्ताहरैः संसूचितं यत् सीमासुरक्षाबलानां कार्याचरणे जम्मू राज्ये आरएसपुरा संभागे अब्दुलियान सीमा उपरक्षण क्षेत्रे अवैधप्रवेशकः एषः मृत्युम् उपगतः। अस्य अवैध आव्रजकस्य अभिज्ञानं सम्प्रति प्रचलति, सममेव तस्य लक्ष्यस्य च अन्वेषणकार्यं प्रचलति। सीमासुरक्षाबलस्य प्रवक्त्रा प्रोक्तं यत् एतां घटनाम् उद्दिश्य पाकिस्तानी रेंजर्स इत्यनेन साकं कटुविरोधम् अपि समंकितम्। रेलवे सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवोचत् यत् तमिलनाडोः रामेश्वरं स्थले आधुनिक पम्बन सेतोः उद्घाटनं देशाय ऐतिहासिकं क्षणं वर्तते। तेनोदीरितं यत् प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी श्वः अस्य सेतोः उद्घाटनं विधास्यति। अवधेयं वर्तते यत् अयं सेतुः सागरीयजले निर्मितः प्रथमः वर्टिकल लिफ्ट इति सेतुः वर्तते, यो हि प्राचीन तमिल संस्कृतिं, सभ्यतां, तमिल इतिहासं च प्रदर्शयति। अद्य राष्ट्रिय सागरीय दिवसः अस्ति। केन्द्रीय मन्त्रिणा सर्बानन्द सोनोवालेन 62तमे राष्ट्रिय सागरीय दिवसावसरे अद्य नवदिल्ल्यां मेरीटाइम अवेयरनेस वॉकेथॉन इत्येतस्य शुभारम्भो विहितः। डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनद्वारा पारस्परिक शुल्कस्य प्रभावम् उद्दिश्य वैश्विक ब्रोकरेज हाउस इत्यनेन अपि च अर्थशास्त्रविद्वद्भिः अमेरिकायाम् आर्थिक मन्दतागमनस्य सञ्चेतना प्रकटिता अस्ति। जेपी मॉर्गन चेस एण्ड कंपनी इत्येतस्य अनुमानं वर्तते यत् शुल्कभारस्य कारणेन वास्तविक सकल गृहोत्पादेऽपि अपचितिः आयास्यति इति वार्ताः।